Everyone, I'm Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I'll be discussing about can future property be transferred. See, before starting this video, I would like to advise you that please carry your barracks with you. I'm carrying mine. So why I'm saying to carry your barrack, not only for this video, but whenever you are studying law, you should always carry your barrack. So it would be very easier for you to underline the keywords. It would be very easier to jot down the points what the lecturer has made. So whenever in future you will read that section, you can immediately recall that what exactly the section wants to say. And also one more important thing, ये जो barrack है ये आपको खुद खरीदना चाहिए. It should not be borrowed by anyone else. This barrack should only and only belong to you and no one else. So that's my personal feeling, that you should always carry your barrack. This barrack should always belong to you, and unless and until you are studying jurisprudence, because in jurisprudence you don't have to carry any barrack. As you can see, there is no barrack for jurisprudence, but apart from jurisprudence you have to carry your barrack. So in my previous video, I have explained about the transfer of property, the term transfer of property. I have explained what does the term movable property and immovable property mean, what are the difference between the two. So in this video, I'll be telling that can future property be transferred. See, as I told in my previous video that the expression transfer of property is defined under section 5 of the Transfer of Property Act. Let's recall that. उसी सेक्शन से जो है आपको पता चल जाएगा कि कैन फ्यूचर प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड और नॉट. सो सेक्शन 5 रन्स एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer the property is to perform such act. इस आप खुद भी ना किसी भी सेक्शन को अगर पढ़ते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, दैट व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस सेक्शन. ओके, व्हेन वी हैव अ लुक ऑन द सेक्शन 5, वी कैन सी दैट द सेक्शन 5 इज क्लियरली सेइंग दैट एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी to one or more living persons. So this point has to be noted here, that living person conveying property to other living person. जिससे हमें ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर हमें प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफरर और जो ट्रांसफरी जो है दोनों जो है लिविंग पर्सन होने चाहिए. अब आ जाते हैं उनको क्या करना है, दे हैव टू कन्वे द प्रॉपर्टी व्हेन द कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी इज टेकिंग प्लेस. अब बात आती है कि कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है. सो कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन देयर इज a transfer of new title, मतलब किसी person को when there is a creation of new title means पहले जितनी भी rights थी, जितने भी rights थे उस property को लेके वो किसके पास थे, ट्रांसफरर के पास थे. अब वो जितने भी rights हैं, जो title था उसके पास, जो ownership थी उसके पास property की, वो अब कहाँ ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफरी के पास. तो there is a creation of new title. वो title जो पहले ट्रांसफरर के पास था अब वो ट्रांसफरी के पास आ गया. So that is the word conveyance of property means. अब एक बात आ जाती है in present or in future. This is very important and this is the expression which we have to discuss today. Can future property be transferred? So बहुत लोग इसी चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर अब इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो प्रॉपर्टी अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है तो क्या उस प्रॉपर्टी को हम कन्वे ट्रांसफर कर सकते हैं. सो पॉज द वीडियो एंड थिंक. You can take your time, you can read this section again and please answer this video. I would love to hear the answer from you guys. Please comment down below if you know the answers. Okay, so the answer to this question is no. जो भी property जो at present existence में नहीं है, that cannot be transferred. The property has to be existence at present so as to transfer. This section, one thing is clear, that the transfer of future property cannot take place. यहाँ पे जो present और in future जो expression जो use किया गया है, that governs the word conveys and not the word property. So the property has to be in existence at present. और जो कोई भी फ्यूचर प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर आप बाय चांस आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो कि इन फ्यूचर आपकी हो सकती है बट एट प्रेजेंट नहीं है, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी. एंड एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्या जो
पार्टीशन जो होता है हिंदू जॉइंट फैमिली के बीच में, जो भी पार्टीशन होता है को पार्टनर्स के बीच में, क्या उसको भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोलेंगे? पॉज द वीडियो एंड थिंक. So the answer to this question is that partition does not come under the transfer of property. Why? Because as I have explained that this section is saying that person conveys the property, और conveyance of property का मतलब मैंने आप बताया that creation of a new title, creation of new right. तो और अगर हम partition की बात करें तो वो जो co-partner होते हैं वो तो और क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स तो पहले ही उस प्रॉपर्टी पे उनका जो है राइट होता है उस प्रॉपर्टी पे. पार्टीशन के बाद तो उनका जो कलेक्टिव राइट था वो तो सिर्फ सेपरेट होता है, मतलब कि वो जो राइट उनके पास पहले एग्जिस्टेंस में था वो पार्टीशन के बाद उनका जो राइट है वो स्पेसिफाई होता है. तो देयर इज नो क्रिएशन ऑफ न्यू टाइटल. पार्टीशन में वो टाइटल उनके पास पहले से ही होता है. सो the answer to this question is that no, partition of a Hindu joint family would not come under the expression Transfer of Property Act. And at last, the answer to the question, can future property be transferred, is a complete no. Future property cannot be transferred. The property has to be in existence at present. Thank you so much. That's all for today's video.